हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द प्रॉब्लम। द फॉलोइंग शोज द रिटेल प्राइसेस रुपीस पर केजी ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इन सम शॉप्स सिलेक्टेड एट रैंडम इन 3 डिफरेंट प्लेसेस। तीनों प्लेसेस है, प्लेस ए, बी और सी, और इस 3 प्लेसेस से पर केजी कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी का सैंपल लिया गया है। तो प्लेस ए में कुछ शॉप में 6 है, कुछ में 7 है, इसमें किसी में 5 है, इधर 9 है, ₹10 है, ₹11 है, और प्लेस सी में कुछ शॉप में 5 पर केजी है, 6 पर केजी है और 4 पर केजी है। तो कैरी आउट एनोवा टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से बताना है कि जो इसका जो डिफरेंसेस है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। H0 is the null hypothesis. Null hypothesis is that there is no differences in prices. तो जो apparently लगता है कि रिजेक्ट होने वाला है जो प्रोपोजिशन, उसको null hypothesis पकड़ेंगे। नेक्स्ट विल टेक आवर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देयर इज differences in prices of commodities। तो इधर भी commodities कर देते हैं। तो फर्स्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि टोटल करेंगे। तो ये जो है इसका टोटल करेंगे। 13, 18 आएगा, 19 और 30 आएगा, और इसमें 15 आएगा। ठीक है, तो और इसका मीन निकालना है। मीन को बोलेंगे कि xi बार। तो मीन कितना होगा? 18/3, 6, 30/3, 10 और 15/3, 5। नेक्स्ट विल कैलकुलेट ग्रैंड मीन। ग्रैंड मीन को बोलेंगे x बार। तो ग्रैंड मीन कौन सा होगा? तो मीनों का मीन ऑफ द मीन। ओके, तो 6 प्लस 10 प्लस 5/3, दिस इज 16, 21/3, 7। ओके, वी विल कैलकुलेट MSW, मतलब मीन स्क्वायर विद इन सैंपल। दिस इज MSW। और कैलकुलेशन ऑफ MSW we have to calculate SSW. SSW is given by summation I of summation j into xij minus xi bar square. तो इस नोटेशन का मतलब समझेंगे। तो दिस इज वेरी सिंपल। ईच विल टेक ईच इंडिविजुअल एलिमेंट और उसके साथ उसका जो मीन है, इस मीन का डिफरेंस निकालेंगे। 6 - 6 स्क्वायर, पहले ये कॉलम पूरा कर लेंगे। 7 - 6 स्क्वायर प्लस 5 - 6 स्क्वायर। तो ये कॉलम खत्म हो गया, फिर इधर से पकड़ेंगे और इसका मीन है 10 प्लस 9 - 10 स्क्वायर प्लस 10 - 10 स्क्वायर प्लस 11 - 10 स्क्वायर। ये खत्म हो गया। अभी इसको मीन पकड़ेंगे और ये 5 - 5 स्क्वायर प्लस 6 - 5 स्क्वायर प्लस 4 - 5 स्क्वायर। ये होगा 1 2 3 4 5 6। इट वुड गिव अस 6। नाउ विल कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज now we'll calculate degree of freedom. Degree of freedom is n-k. So n is total number of elements. टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 कैटेगरी में कितना है? 1 2 3। इट गिवन अस 6। और विल कैलकुलेट MSW. MSW is given by SSW divided by degree of freedom. 6/6, it would give us 1. Now we'll calculate MSB. For calculation of MSB, we have to calculate SSB. So SSB is given by summation ni into xi bar minus x bar whole square. अब इस नोटेशन का मतलब समझते हैं। तो इसका मतलब है कि each
group में how many elements are there? 1, 2, 3. So we'll write 3 here. And then we need the grand mean. This is grand mean, or this is given by x bar. Okay, so we'll select this, and now we'll find mean से इस grand mean का difference वो उसका square निकालेंगे. तो यह mean is 6 minus grand mean is 7 whole square, plus in this category 3 items are there, और now इसका mean कितना है 10 minus grand mean. So this is done, and now for this group we'll select this mean, और इस mean से grand mean का difference निकालेंगे, और इस group में how many elements is there? 3. So now the difference is 5 minus 7 whole square, and we'll calculate this. So SSB gives us 42. Now we'll calculate degree of freedom. In this case, degree of freedom is in a particular category how many, that is given by k minus 1. In this group how many? 3 samples are there, 3 minus 1, so degree of freedom is 2. And now we'll calculate MSB is given by SSB upon DF. SSB is 42 by 2, that is 21. First column for setting up ANOVA table, you have to write sources of variation, then sum of squares, degree of freedom, mean squares, F MSB by MSW, this is observed and tabulated. इस पे 2 कॉलम करना है. Then sources of variation between samples. Between samples को क्या बोलते हैं? SSB बोलते हैं. We call SSB sum of square between sample, and that value is 42. We have already calculated. Within samples, that value is SSW, and we have calculated the value, that is 6. Degree of freedom for SSB we have calculated, that is 2. So MSB is 42 by 2. So for calculation of MSB we have calculated, we have shown you how to calculate MSB, that is 21, MSW 1. So our observed F ratio would be, ऐसे F ratio calculate करते हैं, MSB divided by MSW. So here our MSB value is 21 and our MSW is 1. So F ratio is 21. Okay, and this is F value, this is given, and in the problem it would be given, or in the table for 2 and 6 degrees of freedom at 5% signification level, that value is 5.14. So now समझते हैं decision rule. Decision rule क्या है? Accepting or rejecting the hypothesis. If F observed is greater than F tabulated, reject H0 and accept H1. So carefully इसको समझना है, एक ही लाइन सिर्फ समझना है. If F observed means observed value of F is greater than F table value, then we'll reject H0 and accept H1. Okay, so in this problem our observed value is 21. So F observed is 21 and F tabulated, that is table value, is given in the problem 5.14. So this condition satisfied. F observed here is greater than F tabulated, so we will reject H0 and we'll accept H1. We'll accept our H1, and H1 says that there are differences in prices. Okay.